Good morning. Welcome me back in the topic that is force. Before we start the force, I'll just revise you a few things, and at the same time, one small thing we left to complete that also will be doing it right now. So you remember that this we derived. You remember derived the formula for force using the second law of motion. We derived it, and you noted it down. Let me tell you, physics is something really very interesting, very interesting, but unless and until you understand it, the interest on this topic will just vanish like anything. So see that at any cost you understand it, and it takes time. Let me tell you, it really takes time to understand the physics. That's the reason Newton till today he is considered as a great person. That means he is one of the those fellows who could literally change the world completely. Okay, one of those fellows, Einstein, Newton, is considered as these fellows literally changed the complete world itself. Okay, they changed the point of view, they changed the eyes of the people all over the world, let me tell you. And it is not an easy deal, it is not an easy task. I hope you understand that. He has literally changed everything. Whole thought process itself he's changed. And that really takes efforts, patience. Okay? And that's the physics is. So it's something really very great. Really very great. And that we are learning. Okay, so feel that. Feel that, and then you will understand okay, how beautiful the physics is. Okay, now here we will start. Let's not waste our time in giving lecture and all. We'll start the content. तो मेरा एग्जैक्टली लुकआउट क्या है कि आई नीड टू अंडरस्टैंड कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर यूजिंग डिराइव द फॉर्मूला फॉर फोर्स यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये हमने किया था. I'll just do that again for you. The force is directly proportional to the rate of change of momentum, p2 minus p1 upon time. This is what the second law of motion says that. You can write second law of motion whenever you are asked for deriving force. You can write second law of motion. So second Newton's second law of motion states that the force acting on the body is nothing but directly proportional to the rate of change of momentum, and it acts in the same direction where the force is acting. So that's a simple thing, and we know that. And then we can write this, and then equal to sign I'll convert in as giving the k there. P2 is equals to m into v2 minus m into v1 upon t. M can be taken common, so f is equals to km into v2 minus v1 upon t. As I have said k is equals to 1 and v2 minus v1, तो वो बाद में करते k m into a होगा, ये acceleration हो जाएगा. तो I need to know about k. तो k क्या होता है? तो k is constant of proportionality and it comes equal to k. It comes equals to 1. So what is k? Let k is constant of proportionality and k is equals to 1. ये 1 कैसे आया? It is after some experiments, this value of k is been found. Okay, after some experiments. So what sort of experiments are conducted? Like force is taken, some 1 Newton force is applied on 1 kg, 1 kg of mass. Then what the acceleration of that object is, that has been measured. So the acceleration also comes 1. That means the value of k is of course a 1. So many different experiment with different objects has been conducted, and this value of k is been found out. Okay, and that is that what you need not to know the experiments, you just need to know the value of k, and that is 1. So therefore I get force is equals to mass into acceleration, and that's the answer we got it. Am I correct? Right? And then we have to understand the next part, that is how to derive द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है वो पहले देखते हैं. तो फर्स्ट लॉ ये बोल रहा है, इफ यू आर नॉट अप्लाइंग फोर्स, इफ फोर्स इज not there, or you can say it is unbalanced force is not there. I can say the unbalanced force is not there, object won't move, no change in the motion. ये क्लियर हो गया? I repeat again. If force is not there, unbalanced force, I can say, in short I wrote it. If unbalanced force is not there, there is no change in the motion. This is what your first law of motion says that. तो हमें ये प्रूव करना है यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है? F is equals to mass into acceleration. अभी force is not there, that means the force is zero. Unbalanced force is not there, तो mass into v2 minus v1 upon t, or you can say v minus u upon t also.
ओके, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। m तो जीरो है, इधर शिफ्ट हो गया तो वो भी जीरो हो जाएगा, टाइम भी जीरो हो जाएगा, राइट। तो v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो। अभी u को इधर शिफ्ट करते हैं, u इज इक्वल टू v। व्हाट डज दिस मीन? v इज फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी। what it is saying that u is equals to v, मतलब final velocity is equal to initial velocity. Okay, what does it mean? There is no change in the motion. This states that this state or this suggests that there is no change in the motion, and I think that's it. ये रहा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना। मतलब ये जो लॉज है वो रिलेटेड है। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट द लॉज आर रिलेटेड? द फर्स्ट लॉ इज just in relation with the second law, isn't it? And second law is of course has got a relation with the third law, because it's again a force itself. So there are only three laws of motion that has Newton provided. The first law is related to uh, what do I say? You complete this, ये derivation complete करो, ठीक है। तो first law is related to inertia, second law is related to force, and third law is again something else that we'll be discussing right now. But before that कुछ questions complete करते हैं जो left out है। एक ही question रह गया मुझे लगता है, पता नहीं क्या है, मैंने भी देखा नहीं वो question. The velocity time graph of the ball of mass 20 gram, mass given है, moving along a straight line on the long table is given. That means a long table ball is moving, of course due to friction the ball will reduce its speed. तो वो तो दिखाया है उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। जैसे जैसे बॉल आगे जाएगा 10 सेकेंड्स वो मूव हो रहा है, तो पहला तो सबसे ज़्यादा स्पीड था, उसके बाद धीरे 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 वो कम होता गया, एंड देन इट सडनली स्टॉप आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में स्टॉप हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है बात यहाँ पे। यू मस्ट नो दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसका जो एरिया जो होता है, एरिया अंडर द कर्व इज डिस्टेंस, ये आपको पता होना चाहिए। बस अभी राइट नाउ रिक्वायर्ड नहीं है, बट स्टिल आई जस्ट सेड यू दैट इट इज़ डिस्टेंस। हमें मास इज गिवन इन द क्वेश्चन, वो भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। करना क्या है वो देखते हैं। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट? फोर्स मतलब ऑफकोर्स अ फ्रिक्शन फोर्स द टेबल इज एक्सर्टिंग। तो द फोर्स, हाउ विल आई गेट? द फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इज 20 ग्राम, तो 20 अपॉन 1000 आई कैन से। ग्राम है तो उसको केजी में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। इनटू एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी। ओके, तो कितना टाइम लगा उसको? इट इज़ 2/100। 100 को मैं पर्पसली इसको फिर से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, आई नो दैट वाई आई एम डूइंग दैट। v माइनस यू, v इज इनिशियल वेलोसिटी, इट इज़ 20 आई सेड, आई गेस। अरे यार, इट इज़ हॉरिबली गिवन इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, माई गुडनेस। सेंटीमीटर, यू कैन चेक दैट हियर इट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अभी देयर इज नो ऑप्शन। देखो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसको कन्वर्ट करना तो पड़ेगा, डिवाइड बाय सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो इट इज़ 0.2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडिंग 20/100। रिमेंबर ये करना पड़ता है, मतलब कन्वर्जन्स यू हैव टू नो प्रॉपरली। ओके, देयर इज नो ऑप्शन। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 0.2, लेकिन फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। तो 0 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0.2 अपॉन टाइम। टाइम कितना लिया उन्होंने? 10 सेकेंड्स का टाइम लिया। देखो 1 2 3 है ना, दिस इज 10 सेकेंड का टाइम लिया टू स्टॉप द पर्टिकुलर बॉल। तो हियर वी हैव समथिंग लाइक माइनस टू 0.2 इंटू 2 इज 0.4 एंड माइनस अपॉन 1000। ऑफ कोर्स आई कैन कन्वर्ट दैट इनटू डेसिमल। तो 3 जीरोस है, 1 2 3 एंड ऑलरेडी 1 0, तो 4। ये रहा न्यूटन एंड साइन नेगेटिव। As it is a friction, it has got a negative sign. Friction is always with a negative sign, remember that, because it is in the opposite direction of the motion of the object. That's why. Chalo, done. That's it. Conversion, in case if conversion is troubling you, then please tell me, we will have a different session specially for the conversions, क्योंकि वो तो हमेशा रहेगा ही, कोई भी क्वेश्चन आए आपको कन्वर्जन तो रहेगा ही 100%। तो उसके लिए एक अलग से सेशन देते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड। एक ड्राइव लेते हैं, कन्वर्जन ड्राइव। ओके, एंड देन वी विल बी डूइंग इट। ओके फाइन, जितना टाइम मिलता है उतना टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
Now let's talk about Newton third law of motion. Let's begin this. Newton third law of motion has got a lot of applications which you are observing in a day-to-day life, and as well as so many times you must have observed it or you must have seen it, because it is very fascinating, very much fascinating. तो क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने मैं आपको दे सकता हूँ. टू एन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ओके, टू एन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अभी एक एग्जांपल सिंपल सा मैं देता हूँ आपको. Imagine you and your friend with the same weight. I'm saying same weight, sitting on a two chair. Okay, दो chair है ऐसे. Just a minute. How can I write it? You and your friend are sitting on a chair, and your friend is right in front of you, and you push your friend of same weight, maybe of same weight, I can say. You push your friend backward, so there can be possibility that your friend or the chair of the friend won't move, because your weight is also same and his weight is also same, or it might move, right? Lekin imagine instead of this uh, chair has got a wheels. Just imagine if the chair has got wheels. Okay, and then you push your friend. So basically what is expected result is that your friend should go behind, but what happens is even you move backward. Okay, yeah, anytime if you are free and if you have got these kind of a chairs in your house, you can try that, asking someone to sit on the chair. Oh, need not to have equal weight, but at least on an average, the fellow should have similar weight that what you have got. You will understand, you will realize that even you are moving backward, and that happens due to one simple reason, that is Newton third law of motion, that you are doing some action on the fellow, that is called as action, and when you go back it is nothing but the reaction. That is nothing but the reaction. Very interesting है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. यही एक एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल है. व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ बैंक ऑफ अ रिवर, इमेजिन करो, और यहाँ पे एक बोट है. ओके, एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन द बोट and trying to jump on the bank. So when you jump on the bank from here to here, jump karte ho, so what happens is you are moved ahead, that is for sure, you move ahead, but in the bargain of moving ahead, you push a kind of a force. Because of that, this boat goes backward. Anytime, I don't know whether you have observed this or no. This is the fact. If you're not observed, you can even think about swimming. When you swim in the water, what happens is, what you do, you move the water backward. You must have observed that, and then only you are, pushed ahead. So it isn't it, it is action and reaction, right? You must have even observed that a balloon, filled balloon, inflated balloon, if you just release it, what happens is that balloon moves like anything. Okay, so it takes a kind of a random motion and then it falls down till the time all the air moves out from the balloon. So what happens here is, what is the reason behind this thing is nothing but there is a balloon and the air from the balloon moves out with it. So that is the react action, and the reaction is the balloon moves in opposite direction is a reaction. So what you see is nothing but the reaction, that balloon is moving in a random motion, right? So these are the few simple examples I can give you. Even the recoil velocity of the gun, you can check. Recoil velocity of the gun, what is recoil velocity of the gun? When you shoot bullet from the gun, isn't it the gun moves backward? That's called as a recoil velocity. So when gun is moving backward, that's a reaction. Action is the bullet is moving ahead, and the reaction is the gun is moving backward. So Newton third law of motion states that to an every action, so he has stated the common rule, to an every action there is equal and opposite reaction. See, if you are pushing the wall is also pushing you. That's the reason you couldn't move the wall, isn't it? Yes or no? So that is nothing but what? Wall is applying a kind of a force on you. Okay, and that is why you are not able to move the wall, and that is nothing but equal and opposite reaction. That's the reason it is unbalanced force, and no displacement, nothing is moving, it is unbalanced. So it is simple as that. Okay, it is to an every action there is equal and opposite
reaction. So very simple. Okay. Even an example of rocket is also a great example of you take a Diwali wala rocket or you take a spacecraft wala rocket. Both are similar thing in terms of Newton third law of motion. So when you lit a fire to the rocket, Diwali wale rocket ko, to what happens is the material inside it start burning vigorously, and it creates a kind of a gas, which gas is been thrown downward. When things are being thrown downward, तो इसका opposite reaction होगा upward and the rocket moves up. The same thing happens in the spacecraft as well. The the space launcher, the aircraft launcher, or maybe satellite launchers, what we know, all those launchers also has got a similar kind of a mechanism where there are different gases like hydrogen or butane are being burnt inside it. There is a lot of quantity of these gases inside it, so that burns inside it, and then the gas is being thrown. I can show you the diagram. This is the you know रॉकेट, यहाँ पे ऐसे स्लिट होता है. तो the gases are thrown downward here, and as a result of reaction the rocket moves up, and that too with a very high speed. You must have observed that. Okay. If you have observed the Gravity movie, this will be more clear. There's a very beautiful movie available named as a Gravity. Very beautiful, very interesting. So what happens is, and what are these Newton laws of motion, you will easily understand by that particular movie. Of course you might feel the movie is quite boring because everything, the complete movie is shoot in the space itself, so there is nothing shown as a scenery or scene or maybe any kind of love story or something. But yes, movie is scientifically awesome. So anytime, in case if you get time now, then you can watch that movie on Sunday or somewhere some other day. This laws of motion will be more clear there. Okay, and watch it like you're watching a scientific movie. Fine. So that's it. The Newton third law of motion, you understood that every action there is equal and opposite reaction. The most simple law between the three laws. Okay, you have to remember these three laws properly as it is. Okay, because there can be questions asking about some reasons where you have to give the Newton laws of motion, or there can be direct question that give Newton laws of motion. So for that you need to remember all the three, and the three ही तो है law. Okay, you can easily remember it. Law of conservation of momentum. This is one of the uh, greatest example or greatest or simplest understanding about Newton third law of motion. Law of conservation of momentum. The conservation of energy you must have observed till this time, or you must have heard about it. मतलब एनर्जी कैन neither been created nor been destroyed and energy of the universe remains same. ओके, तो ये हमने देखा है, ये हमने सुना है कि एनर्जी जस्ट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ओके, दैट्स कॉल्ड एज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मतलब एनर्जी इज नेवर reduced or never generated. Okay, we can just use the energy. Okay, we cannot generate the energy. That's what the law of conservation of energy says. It's not only law of conservation of energy, law of conservation of mass है, law of conservation of matter है, क्योंकि matter कभी भी हम लोग destroy नहीं कर सकते. Okay, we cannot destroy the matter. We can just use the matter. Okay, that's the thing. That's the matter. We can use the matter and we can convert from one object to another object. Okay, one compound to another compound, but we cannot destroy the matter on the earth. That means the oxygen which is present on the earth will remain as oxygen only. Maybe in some other form it would be. Okay, but it will remain as it is. We cannot destroy it. So this is what the conservation mean. ओके, द कंजर्वेशन मीनिंग इज सेम थिंग. तो यहाँ पे जो लॉ है वो फिजिक्स फॉर्म में है, इसलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट दैट द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. बहुत सिंपल है स्टेटमेंट, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इसका बहुत डीप है. तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं. इसके ऊपर एक कोई डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाता हूँ. सिंपल बात है, सिंपल सी बात है. देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेरे पास एक असर वो स्नूकर वाला बॉल है, एंड दूसरा कुछ स्मॉल छोटा अपना खिलौने वाला बॉल है. ठीक है, इसका मास कुछ M1 है, इसका मास कुछ M2 है, कुछ है 5 kg 5 kg 2 kg वट एवर. ठीक है, जान दो. आई अलाउ दैट दिस स्नूकर वाला बॉल टू मूव टूवर्ड्स द स्मॉल बॉल एंड इवन द स्मॉल बॉल टू मूव टूवर्ड्स दिस. So what is happening? There is some velocity u1
and there is some velocity u2 of both the objects. Both the objects are moving with some velocity. If an object has got a mass as well as velocity, both has got a momentum. ये इसका मोमेंटम होगा p1 और इसका मोमेंटम होगा p2. तो p1 इज इक्वल टू, देखो, m1 इंटू यू वन एंड p2 इज इक्वल टू कितना आएगा, m2 इंटू यू2. आई नो दैट मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी. Now what happens is after some time this ball will collide with this small ball. Collision matlab they fall on each other. Of course not with that force that they will break each other, but I'm just saying that they collide on each other. When they collide on each other, that time what happens is, after that what happens is, after some time this ball will move in one direction and the other one again start moving in another direction. ऑफ कोर्स इसका मास रहेगा m1 ही, इसका मास भी रहेगा m2 ही, नो चेंज इन द मास. बट इसकी वेलोसिटी जो होगी वो v1 होगी और इसकी वेलोसिटी होगी v2, बिकॉज वेलोसिटी विल चेंज, है ना, वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज. तो इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा m1 v1 एंड m2 v2. ये होगा मोमेंटम. ठीक है, मोमेंटम एक काइंड ऑफ वो वर्क कुछ कर सकता है, उसको बोलते हैं मोमेंटम, जो काम कर सकता है. ठीक है, तो व्हाट इट सेज, द स्टेटमेंट देखो क्या बोलता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब टोटल मोमेंटम अगर मैंने लिया, मतलब इन दोनों का अगर एडिशन किया तो ये हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन. ये जो है मोमेंटम बिफोर कोलिजन है, और इनका एडिशन किया, ये जो है मोमेंटम, ये है आफ्टर कोलिजन. तो ये है बिफोर कोलिजन, ये है आफ्टर कोलिजन. ये क्या आता है, सेम ही आता है. ओके तो देखो कितना इंटरेस्टिंग सी बात है, कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है कि कोई भी वेलोसिटी हो सकती है ना, आफ्टर कोलिजन कुछ भी हो सकता है ना. वेलोसिटी एक की अलग हो सकती है, दूसरी की कुछ भी हो सकती है, लेकिन इक्वल क्या है, दोनों का एडिशन जो है मोमेंटम का वो क्या आता है, सेम ही आता है. ओके दैट मीन्स m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. दैट्स इट. कितना सिंपल है, इजंट इट. ऑफकोर्स इसका डेरिवेशन भी है, तो वो हम लोग डिराइव करेंगे इन अ शॉर्ट टाइम. बट आपको ये तो पता चल गया कि ऐसे कुछ होता है, ये जो है हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया, ऐसे कुछ होता है कि मोमेंटम जो होता है वो क्या आता है, इक्वल आता है. अभी ऑफकोर्स इसको डिराइव करेंगे. तो चलो डेरिवेशन. डिराइव द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट to an every action there is equal and opposite reaction. That means if one body is applying some force on the other object, the same object is also applying the equal amount of force but in the opposite direction. मतलब a body इस तरह फोर्स अप्लाई करिए तो बी बॉडी इस तरह फोर्स अप्लाई करेगी, एंड इसका फोर्स एफ होगा तो दूसरा का होगा माइनस एफ. याद रखो, और इक्वली होगा, क्वांटिटी भी सेम होगी, बस साइन वे अलग होगा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में. दैट्स इट. ओके so that's what Newton third law of motion said. What Newton third law of motion said, that to an every action there is equal and opposite reaction. So according to Newton third law of motion, to an every action there is equal and opposite reaction, वो स्टेटमेंट लिखा. तो क्योंकि जगह बहुत कम है तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट इट इन शॉर्ट. तो वी हैव फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, बट उसके लिए मुझे कुछ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, जैसे हमने अभी भी लिया था. तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं. मेरे पास कुछ एक m1 ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, एंड दूसरा ऑब्जेक्ट है m2. तो इनिशियल, ये है इनिशियल, कोलिजन, एंड लास्ट वन इज आफ्टर कोलिजन, मतलब फाइनल. इसका कुछ वेलोसिटी है u1, इसका वेलोसिटी है u2. Not necessary that they have got a opposite direction. They can be in the same direction but different velocities. So they get a chance to collide. That's it. Collision. Collision के टाइम हम लोग वर्कआउट नहीं करेंगे because that is not there in our syllabus. During collision क्या होता है, आफ्टर कोलिजन क्या होता है वो देखते हैं. आफ्टर कोलिजन m1 ऑब्जेक्ट विल मूव सम अदर डायरेक्शन एंड m2 छोटा वाला ऑब्जेक्ट जो है दैट विल मूव इन सम अदर डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v1 विथ वेलोसिटी v2. ओके, u stands for initial, v stands for final. That's it. यहाँ तक समझ में आ गया. I know that
एफ इज इक्वल टू माइनस एफ. क्यों? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट. टू एन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. एक फोर्स है, दूसरा भी अपोजिट होगा. दैट्स इट. डन. फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. ये जो मास है वो m1 होगा, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट है. देखो, ये m1 m2 पे जितना फोर्स कर, जितना m1 करे उतना ही m2 भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऐसे न्यूटन बोल रहा है, तो हम लोग वो ले रहे हैं. तो मास इंटू एक्सेलरेशन, हम लोग इसको a1 बोल देते हैं, एंड माइनस ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन a2, बराबर है ना. व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी. तो ऑब्जेक्ट वन का चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? u1 टू v1 हुआ. तो m1 इंटू v1 माइनस u1 अपॉन t इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2 इंटू v2 माइनस u2 अपॉन t. मतलब जो भी ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है वो मैंने लिखा. v and u stands for initial and final. tt get cancelled because time remains same for both the things. जो भी हम काउंट करें वो सेम टाइम के लिए काउंट करें, therefore टाइम रिमेन सेम. एंड ये हमेशा मैं भूल रहा हूँ, ये m2 है. अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. देखो, m1 v1 माइनस m1 u1 माइनस m2 v2 प्लस m2 u2. जो नेगेटिव है वो उधर शिफ्ट करते हैं सो दैट इट बिकम पॉजिटिव. तो अभी चेक करते हैं. m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2. ये है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और ये है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, एंड फॉर्चुनेटली दे हैव बिकम इक्वल. देखो कितना सिंपल सा पार्ट है, कितना सिंपल सा पार्ट है. लगने के लिए ऐसे लगता है, अगर इनकेस ये डायरेक्टली आप देखोगे तो ऐसे लगता है अरे बाप रे ये क्या है, गोले गोले निकाले हैं. एंड द मास m1 v1 m1 v2, कुछ याद नहीं रहेगा एग्जाम के टाइम, लेकिन है बहुत सिंपल सी बात है. लॉजिकली इफ़ यू अंडरस्टैंड थिंग्स आर वेरी वेरी सिंपल. तो ये रहा आज का आपका कंटेंट. तो ये आज कंप्लीट कर देना है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दो डेरिवेशंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इफ़ यू वांट. बस मुझे लग रहा है कि अब आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू सो मच. ये सब कुछ कंप्लीट कर दो. कल न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके एक्सरसाइज करके कंप्लीट कर देंगे टॉपिक को. बाय बाय, सी यू. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ओके. तो कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट फील फ्री टू डिस्कस दैट डाउट. ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको जो भी करना है, जो भी आप नॉर्मली फिजिक्स में हम लोग करते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. इट इज़ इक्वलेंट टू मैथमेटिक्स. ओके. सो डोंट कंसिडर दैट आई एम डन विथ इट, आई एम डन, एक बार वीडियो देखा तो हो गया, ऐसा नहीं होता फिजिक्स में. आपको बहुत अच्छे से उसको